Bringing you all the news breaks in the wake of Trinamool leader Mahua Moitra's expulsion from the Lok Sabha. Mahua Moitra, our sources tell us, has just spoken to her party boss Mamata Banerjee, West Bengal Chief Minister, over the phone following her expulsion from Parliament. Mamata Banerjee is said to have told Mahua Moitra that the Trinamool Congress, her party, is completely in solidarity with her, behind her, with her, and will support her no matter what it takes. Remember, Mamata Banerjee had earlier been accused of not really committing to supporting Mahua Moitra on this entire issue, but following that expulsion, the support from the Trinamool and specifically from Didi, from Mamata Banerjee herself, has solidified and provided a degree of clarity for Mahua Moitra, which comes as a relief even on a day when she's been expelled from Parliament. Suryagni Roy joins me live from Kolkata. Suryagni, Mamata's support, is a boost for Mahua Moitra, especially since in the past there have been questions over whether the Trinamool is committed to supporting her in public. Well, absolutely, Shiv. And Mamata Banerjee has, come out publicly and, she has supported Mahua Moitra in this particular case where she got expelled. Now, Mamata Banerjee was asked in that, whether Mahua will be allowed to contest, and she said that why not? She doesn't see any issues on why Mahua will not be allowed to contest, and she's also made a district president of Krishnanagar. So that clearly indicates that Mamata Banerjee is supporting Mahua. She has categorically mentioned that the party is backing her, is with her, and according to sources, Mahua and Mamata Banerjee also spoke over the phone, where Mamata Banerjee told Mahua that she and the party are backing her. Back to you. Okay, Suryagni, thanks very much for that. Mamata Banerjee has now made it clear that the Trinamool Congress stands with Mahua Moitra. She also claims Mamata claims the BJP violated constitutional norms by refusing to give enough time for a debate over the ethics panel report that recommended the expulsion of Mahua Moitra. Listen in to what Mamata has just said. Party is totally behind the Mahua, and our party will fight along with Indian Alliance together. This matter open our eyes again against the vindictive politics of BJP. It is a betray to our constitutional rights. They ditch the people, they ditch the parliament, they ditch the constitution because they have the majority. Today maybe they are in majority, but tomorrow they may not be there. We have also 2/3 majority. We can do anything. We can expel anybody from the house. But is it proper, without the detailed case, only to expel somebody will give the justice? Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to women and young generation, and for all the community, caste, creed, and everything. And in response to Mamata Banerjee stepping in to provide her support to her former Member of Parliament, Mahua Moitra, the BJP has now hit back in a big way at the West Bengal Chief Minister. The BJP says Mamata used state CID machinery to snoop on Mahua. Very, very grave charge from the BJP, saying that Mamata Banerjee used state machinery to snoop and spy on Mahua Moitra. The BJP says Mamata was aware of Mahua's actions, the alleged actions that have gotten her expelled, and the BJP has now challenged Mamata to sack Mahua Moitra. Well, that's not going to happen, given that Mamata Banerjee has just made it very clear where the Trinamool stands as far as Mahua Moitra is concerned. I want to bring in India Today's Poulomi Saha, who tracks the BJP for us. Poulomi, Mamata Banerjee coming out, settling all arguments and doubts over the nature of her support for Mahua Moitra. The BJP levelling a very grave charge. What do they mean? They're saying
Mamta was spying and keeping tabs on Mahua and was aware of these things that she's been accused of. That's right. It's a very serious charge which has been leveled by the BJP against Mamata Banerjee, saying that she was using the state CID. I'm just going to quote from what Amit Malviya, who's the West Bengal co-in-charge for the Bharatiya Janata Party, and what he's posted on social media platform X. Mahua Moitra had become the face of impropriety in the parliament. Her expulsion was imminent to restore the credibility of the institution. But it is Mamata Banerjee's patronage and selective support for the delinquent MP that must be questioned. She had the state CID snooping on her, so she was aware of everything Mahua Moitra was up to. Did she willfully allow the MP to undermine the institution of parliament, to exercise leverage in corporate houses? What did the poor of Bengal gain? Poor have lost their land and acres of mango groves to Mamata Banerjee's corporate friends, and the people of Krishnanagar, the constituency Mahua Moitra was elected from, suffered since no one raised their issues. We now know what her priorities were. Mamata Banerjee must sack Mahua Moitra from TMC, failing which it would be obvious that she was acting at her behest. Anyway, nothing moves in the TMC without Mamata Banerjee's consent and active collusion. So the BJP is alleging that Mamata was in the know of everything that Mahua Moitra was doing, including that she was talking to Darshan Hiranandani, that she was allegedly taking down questions from Darshan Hiranandani, allowing him and his staff to use her login credentials, her parliamentary login credentials, to in fact pose those questions, pretending to be Mahua targeting a rival business group. Very, very serious charges that the BJP is levelling, saying nothing moves in the TMC without Mamata Banerjee's consent. So it's impossible. Well, let me stay with me. We're getting a live reaction from the Congress party, which has also stood firmly behind Mahua Moitra. Sonia Gandhi was behind her. Listen in to Supriya Srinath. प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी। क्या आप और इंडिया अलायंस महुआ मोइत्रा के साथ में खड़े हैं? मुझे लगता है कि जहां पर मेरी नेता सशक्त रूप से खड़ी हैं, अचल अडिग होकर जब सोनिया जी खुद खड़ी हो गई वहां पर, तो ये सवाल भी मेरे लिए बेमाना है। मुझे लगता है जिस तरह से राहुल जी, सोनिया जी, हमारे पार्टी के लीडर्स, हमारे सांसद आज महुआ मोइत्रा के साथ खड़े थे, वो विपक्ष की एक आवाज है, और हम गांधी की शरण में जाकर अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। आपके सांसद हैं धीरज साहू, उनके जब्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है और इस बात की प्रधानमंत्री का जो सफर शुरू हुआ था प्रधानमंत्री से प्रचार मंत्री बनने का, अब वो ट्रोल मंत्रालय पर आकर रुक चुका है। प्रधानमंत्री अब ट्रोल मंत्रालय का पूरा दारमोदार उठा चुके हैं। उनको ट्रोल मंत्री एक नियुक्त करना था, उन्होंने अपने लोगों को मौका दिया, लेकिन लोग उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से प्रधानमंत्री की आशा थी। अगर प्रधानमंत्री की आप सोशल मीडिया की आजकल की पोस्ट देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब प्रधानमंत्री ने खुद ट्रोल बनने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। धन्यवाद। डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें, वो कह रहे हैं कि विदेश में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करना चाहिए, देश में ही करना चाहिए। उत्तराखंड आइए, देवभूमि, हालांकि कहा जाता है कि ईश्वर जोड़ी बनाते, तो ऐसे में उत्तराखंड आइए और डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को चिंता ये जतानी चाहिए कि इतने सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, लोग यहाँ पर आकर निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग भारत के अमीर लोग विदेश। So Mahua Moitra is no longer a member of parliament, but surely she has options for recourse. She can approach a court, can't she? That's, what the logical next step would be. Let's break it down for you. What next for Mahua Moitra? Can she challenge the ethics panel decision? Yes, she can. She can challenge the ethics panel decision. In fact, she has requested Parliament to review its decision to expel her. She can also challenge the ethics panel's jurisdiction. She can seek a diplomatic intervention. She can file a defamation suit also over the allegations against her. I want to bring in Nalini Sharma, who handles our legal desk for us. Nalini, what options, realistically speaking, does Mahua Moitra have at this point of time? We've seen high-profile members of parliament being expelled recently. Rahul Gandhi, of course, the circumstances were quite different. What are Mahua's options?
First and foremost, we need to understand that one of the three principles of natural justice is that everybody should be given a right to a fair hearing, irrespective of where the procedure is going on. So irrespective of the fact that this is a parliamentary procedure, a right to a fair hearing is everybody's right. So on the principles of violation of natural justice, Mahua Moitra, first of all, of course, has the option of approaching any court, the Supreme Court or the High Court, challenging the decision of the Ethics Committee, stating that the principles of natural justice were not followed and that she wasn't given a fair hearing. Option number two that's available for Mahua Moitra is to challenge the jurisdiction of the Ethics Committee itself, which means challenging the fact that the Ethics Committee should not have heard this matter in the first place. Because as you know, in the Parliament there's also a Privileges Committee, and what we are getting to know from several experts that we have spoken to, that this is a matter that should have originally gone to the Privileges Committee and not the Ethics Committee. So on that ground, Mahua Moitra can also challenge the jurisdiction of the Ethics Committee. Number three, of course, this is a long shot for her, but Mahua Moitra also has the option of approaching senior parliamentary members or members from the government, trying to prove how there was certain bias in this case, because of which the decision is not fair. And fourth and the last option that's available to her, she already has a defamation case going on in the Delhi High Court regarding these allegations. So in case, in that case, it's proven that the allegations are false, then that will of course help Mahua Moitra trying to get some relief and overturn the decision of the Ethics Committee itself. Okay, Nalini, thanks very much for putting that into perspective for us. So there is a possible legal recourse and options before Mahua Moitra. We've got more breaking news coming in. This is a rapidly developing story. We've told you, you can see on our ticker below, all of the things that are options for Mahua and what she stands to lose. But there could be more trouble for Mahua Moitra. BJP sources say that Mahua Moitra's expulsion from Parliament is only the first step in a series of actions that are planned against her. The CBI has already filed a preliminary FIR and an investigation will follow. She had all the opportunity to present her side to the ethics panel, so the principle of natural justice has been served, says the BJP, but she walked out in a huff. Her expulsion has several precedents inside Parliament as well. Okay, we're joined now by Sunita Duggal. She's a member of Parliament and committee member of the Ethics Committee that recommended the expulsion of Mahua Moitra. सुनीता जी, आपका स्वागत है इंडिया टुडे पर. मेरा पहला सवाल सुनीता जी ये है कि महुआ मोइत्रा का जो बयान था एक्सपल्शन के बाद आपने सुना होगा, उनका कहना है कि ये एक कैंगरू कोर्ट है और एथिक्स कमेटी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ऐसा रिकमेंडेशन करने का. आप इसका क्या रिएक्शन देंगे सुनीता जी? देखिए, एथिक्स कमेटी का मतलब ही ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कितना एथिकल है और कितना अनएथिकल है. तो इसीलिए ये इस कमेटी का गठन किया गया है और इसमें उनको पूरा मौका मिला. और इसके साथ साथ जो है जो जयंत दहदराय जी हैं और निशिकांत जी हैं, उनको भी पूरा मौका मिला अपनी बात को रखने का. और उन सब जो है जितने भी वहां पर मेंबर्स थे, उन सब ने भी जो है उनसे क्वेश्चंस किए और उन्होंने अपने अपने बिहाफ पर जो है उसका रिप्लाई भी किया. और खुद जो है महुआ जी ने इस बात को माना है कि उन्होंने कुछ जो है कुछ ये कह सकते हैं कि इन काइंड, जैसे कि कोई स्कार्फ का उन्होंने एडमिट किया कि मैंने जो लिया था, और उन्होंने एडमिट किया कि कोई लिपस्टिक है वो उन्होंने ली थी, और जो लोकल वहां पर जो गाड़ी के लिए जैसे कार के लिए उन्होंने कहा कि वो भी उन्होंने फैसिलिटीज जो है वो अवेल की थी. तो ये चीजें उन्होंने खुद एडमिट की हैं. और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनका वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं कर पाई, तो फिर वो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं ठीक से रिप्लाई कर पाई, तो इसलिए वो एकदम से फिर उन्होंने जो वॉकआउट किया और जो है कमेटी से वो बाहर चली गई. और लेकिन मौका उनको पूरा मिला अपनी बात को रखने का. और मुझे लगता है कि उस मौके को जितना फायदा उनको उठाना चाहिए था वो उतना उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि जब आपके पास सभी मेंबर्स हैं वहां पर और सभी क्रॉस द पार्टी लाइन वहां पर मेंबर्स हैं, तो उनको अपनी बात को जितना वो चाहती है अच्छे तरीके से रखने चाहिए था. इंस्टेड ऑफ के आप वॉकआउट करके चले जाओ, तो उससे तो कोई पर्पस हल नहीं होता है. तो उनको पूरा मौका मिला था, लेकिन उन्होंने जो है, मुझे लगता है कि वो शायद उनके पास जो है वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं थे, इसलिए जो है वो वॉकआउट कर गई. सुनीता जी, ये एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट टेबल होने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा समय डिबेट के लिए रिजर्व होना चाहिए था,
विपक्ष का कहना है कि 2-3 दिन के लिए डिबेट हो जाए, क्योंकि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए इस पे कुछ डिबेट हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि रिपोर्ट टेबल होने के बाद 1 ही घंटे के अंदर उनका एक्सपल्शन हो गया, तो एक जल्दबाजी में हो गया, ये एक परसेप्शन है और एक आरोप भी है। देखिए, ये सब कुछ, चाहे जयंत हृदराय जी की बात करें, चाहे जो हीरानंदानी जी ने जो एफिडेविट दिया, चाहे जो भी निशिकांत दुबे जी ने कहा, वो सब का सब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था। इसके बाद केवल और केवल रिपोर्ट जो ऐसी थी कि जिसको जो है वो टेबल किया गया, तो उस रिपोर्ट के अंदर उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के बेसिस के ऊपर ही जो है वो रिकमेंडेशन की गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था कि रिपोर्ट को जो है वो 2 घंटे के अंदर पढ़ने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई अगर काउंटर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो ना कर सकें। सुनीता जी, क्या आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा को जब ये रिपोर्ट टेबल हुआ था, उनको एक स्टेटमेंट या बयान करने की इजाजत देनी चाहिए थी पार्लियामेंट में? क्योंकि वो बाहर जाके बयान दे रही है, लेकिन एज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सपल्शन के पहले उनको परमिशन देनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है ये? देखिए, सभी चाहे रिपोर्ट्स की बात करें या कि जो कुछ भी जो है उन्होंने जो एथिक्स कमेटी के सामने रखा, वो सबका सब उन्होंने अपनी पार्टी फोरम पर भी रखा होगा, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि उनके जो एक पार्टी के जो मेंबर थे उन्होंने उनके बिहाफ पर सभी बातों को रखा वहां पर। उनको जब एथिक्स कमेटी में मौका मिला था सभी बातें रखने का, तो यहाँ पर उनकी जो है उनकी पार्टी के एक सदस्य ने उनके बिहाफ पर सभी बातों को रखा था। सुनीता जी, हमारे पार्लियामेंट रिपोर्टर पोलोमी साहब भी हैं हमारे साथ। पोलोमी, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन टू सुनीता दुग्गल। सुनीता जी, आपने जो विपक्ष का कहना है, उनका कहना है कि आपने दर्शन हीरानंदानी के स्वोन एफिडेविट को फेस वैल्यू पर ले लिया। दर्शन हीरानंदानी ने कमेटी के सामने डिपोज भी नहीं किया। कोर्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर एक ब्राइब गिवर है और एक ब्राइब टेकर है, तो ब्राइब गिवर को भी आप कटघरे में खड़ा करते हो। दर्शन हीरानंदानी से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। उन्होंने कैश का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने 2-4 लग्जरी आइटम्स और ट्रैवल एक्सपेंसेस और हॉलीडेज के लिए मैंने पे किया, ये कहा है। पर इसका सबूत कहाँ है? क्या उन्होंने आपको कोई आइटमाइज लिस्ट दी है कि क्या क्या गिफ्ट दिए हैं उन्होंने महुआ मोइत्रा को? तो उनसे कोई सवाल जवाब क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जो है राइज होते हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना पर्सनल जो पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी है वो किसी को दे सकता है, और वो भी किसी कॉरपोरेट सेक्टर को, अपने किसी पीए को भी आप रखते हैं, पीएस को भी आप रखते हैं, तो वो आपके घर से सब चीजों को ऑपरेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या जो है कोई कॉरपोरेट सेक्टर जो है इस तरह के उसको आप अपना लॉगिन आईडी दे सकते हैं? नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि एक ही समय पर अलग अलग कंट्रीज से जो है वो आपके लॉगिन पासवर्ड से जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और उससे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। एक ही टाइम में आप यूएस से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके दुबई से आ रहे हैं, आपके दिल्ली से आ रहे हैं, आपके मुंबई से आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है काफी संशय पैदा करता है। अब दूसरी बात आती है कि आपने पूरे अपने टेन्योर में 60 क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए, और उसमें से 51 क्वेश्चंस जो हैं वो उस कॉरपोरेट सेक्टर के जो है जिस बिजनेस में वो बिलोंग करते हैं, जिस बिजनेस में वो हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं? जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 17 से लेकर 18 लाख 20 लाख के करीब लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपके पास एक भी सवाल नहीं है क्या? तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात फिर ये आती है कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, कि उसी कॉरपोरेट सेक्टर से उन्होंने कुछ जो भी चीजें उन्होंने एडमिट की कि हाँ, मैंने ये स्कार्फ लिया, मैंने जो है वहां पर गाड़ी का इस्तेमाल जो है मैंने उनकी तरफ से करवाया, मैंने जो है ब्यूटी के कुछ आइटम्स जो हैं वो मैंने उनसे लिए, उन चीजों को उन्होंने एडमिट भी किया। तो ये 3 अलग अलग तरह के सवाल हैं। तो मुझे लगता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है ऐसा कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी जनप्रतिनिधि को सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो है वो आचरण करना चाहिए। क्योंकि जैसा आप एक प्रतिनिधि होने के नाते आप आचरण करते हैं, आपके जो आपके इलाके के लोग हैं, लोग आपको
अब देखते हैं आपके न केवल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बाहर में, दुनिया में बाहर भी जो है वो देखा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है, पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका आचरण कैसा है। तो अगर आपका ऐसा आचरण रहेगा तो आपके जो वहां पे जो फॉलोअर्स हैं उन सबके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कहाँ पर आपकी सदन की गरिमा है, कहाँ आपकी मर्यादाएं हैं। तो ये सब जो है वो जिम्मेवारी बनती है एक पब्लिक फिगर की, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, कि वो इस तरह का आचरण करें कि ताकि लोग उनको फॉलो करें। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल, एक सवाल ये भी उठेगा कि एथिक्स कमेटी एक सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एक्शन कर रहा है, क्योंकि महुआ मैत्रा के अलावा और भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनका दुर्व्यवहार को लेकर काफी चर्चा हुआ है मीडिया में, पब्लिक स्पेस में, लेकिन एथिक्स कमेटी उनके खिलाफ कुछ नहीं करता। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? सेलेक्टिव लगता है, ये भी एक आरोप है आपके खिलाफ। देखिए ऐसा है कि किसी के साथ व्यवहार जो है वो आमने सामने, किसी का दुर्व्यवहार हो सकता है, किसी का सदव्यवहार हो सकता है, लेकिन जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो उसमें आपका जो आचरण होना चाहिए कि वो उसके अंदर अगर कहीं संशय नजर आता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत सीरियस मैटर है, उसको बहुत सीरियसली जो है वो नोटिस किया जाना चाहिए। और इसीलिए जो है इसके अंदर एथिकल जो हमारी एथिक्स की कमेटी है उन्होंने सबको प्रॉपर टाइम देने के बाद जो है उनको सबको सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। So the questions for the Ethics Committee of Parliament will continue. We've put all those questions to the Ethics Committee, but they don't believe that anything wrong has taken place. But those questions definitely stand, and we will ask them here on India Today. But how did things precipitate to this point? From the eruption of those allegations, Jai Dayadrai and then Darshan Hiranandani, all of it becoming this huge volcano inside Parliament. Then it escalated and finally ended in today's expulsion. Take a look at how today actually played out. Direct involvement in cash war query in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Mahua Moitra. Chaos unfolded in Parliament. At the center of it all, the Trinamool leader, Mahua Moitra herself. दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The outspoken ex-Lok Sabha member grappling with a cash for query allegations expelled from the Lok Sabha after the motion was put to vote. The decision followed the Lok Sabha Ethics Committee presenting and tabling its report in the House, recommending her expulsion from the Lok Sabha over accusations of accepting bribes from businessman Darshan Hiranandani in exchange for submitting pre-approved questions in the House. The Congress stood firmly behind Moitra in the House, requesting time to review the report and an opportunity for the accused MP to present her defense in the Lok Sabha. तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर जो आप चाहते हैं। जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? The Speaker dismissed requests from both the Congress and Mahua's own party, the Trinamool, to allow her to present her case in the House, citing a precedent from a 2005 incident when several MPs were expelled from the House over cash for query allegations in a similar manner. हो
खुद माननीय सांसद महोदया ने The BJP supported the Ethics Committee's recommendations, asserting that proper procedures were followed in its proceedings. एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। By the majority. With Congress leader Sonia Gandhi and other allies standing in solidarity firmly behind the expelled Trinamool MP. Justice has been denied to Mahua Moitra. The expelled MP from West Bengal denounced the decision as a kangaroo court judgment. She insists that the Ethics Committee had no evidence of bribes exchanged as alleged in the original complaint. It refused to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. Mahua Moitra also refuted accusations of sharing login credentials. All of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. A new rallying point for the India alliance as they walk united once again. After appearing disjointed earlier this week following the Congress's drubbing in the Hindi heartland, could this be a new signal moment for opposition unity? With Polomi Saha in Delhi, Bureau Report, India Today. Most important person, Hiranandani. In November, in the lead up to what has happened with the expulsion today, just days after the cash for query revelations against Mahua Moitra unraveled, the then Trinamool MP spoke to India Today's Rajdeep Sardesai in the most detailed series of interviews. Here's the salient points of what she said in her defense. I want to ask you right at the very outset, do you accept that the charges that have been made against you, which are now part of an ethics committee investigation, are very serious in nature? The very nature of the ethics committee, Rajdeep, I have in front of me the Parliamentary Committee on Ethics, and the first thing that the ethics committee tells you that any complaint that has to be made that is not false, frivolous, vexatious, and has to be made in good faith. Let us look at who's making the charges here. Please let us look at who's making the charges. The charges been made by by not some researcher advocate in the Supreme Court. The charge has been made by a person with an established acrimonious personal relationship with me who is engaged in a custody battle over a pet. As ridiculous as it may sound, that is the established truth. These charges have then been forwarded on to by a member of Parliament who has been engaged in a very bitter feud with me over the last 3 or 4 years, and against whom I have even filed a privilege motion for faking his academic qualifications, which, by the way, the very same privileges committee should look into and has not looked into. So the charges right now, the very basis of it reaching the ethics committee is false and frivolous. The chairperson says you've used unparliamentary language backed by the BJP MPs. Yeah. No, one second. Everything is transcribed. There's nothing secret. I have not used any unparliamentary language. Nobody has used any unparliamentary language. The chairperson was reading out from a script that had been handed to him. His line of questioning was
filthy. I am standing there. There are two issues. One is the NIC login. And we need to make this public. There's no rule 275 which is going to protect anybody else. You want to expel us all? Please expel us all. Because this BJP government has taken every rule, every structure that we had in this country and thrown it out of the window. So don't expect us to adhere to anything. And you quote us rule 275. What they did from the beginning was, the rule is, I came in, I gave my statement, then they're supposed to ask, everyone's supposed to ask questions. Before anybody else could start, the chairperson had a 10 or 12 page list of questions. His line of questioning had nothing to do with the two main questions. Why have I been called? One is use of the NIC login, whether it's authorized, unauthorized, and the repercussions of that. That is one issue. The second issue is the purported cash and gifts that you can ask me about, which has been evidence, which has been provided with evidence you can ask me about, which I'm perfectly willing to answer. Which